जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग श्रावणी, निकी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिलाने आज डेरी होगा। यस लवकुश गुड मॉर्निंग। बहुत समय धरिक मु अपेक्षा करथिली किंतु हठात एठी करेंट पळेला। करेंट पळै जिवा जोगु क्लास हे पालानी आ सेति पई मु क्लास टा टिके पोस्टपोन करथिली। आज मोर टिके काम थिला बोली कि तो देखि नबा हमरा वर्तमान जे हमें जहा पढिछे अप टू टिल टुडे, that is aldehyde माने RCHO, ketone माने RCOR dash, aldehyde रो prefix suffix L prefix, formal ketone रो suffix ONE prefix oxo। फर्दर ऑक्सीडेशन करिया द्वारा हमें aldehyde ketone पाइबा बा catalytic dehydrogenation करले भी aldehyde ketone पाइबा बा dry distillation of calcium acid also give rise to aldehyde। by means of Rosenmund reduction reaction we can get only aldehyde, but by reacting dialkyl cadmium with acid chloride we will get the ketone group। further alkyne undergo oxidation or hydrolytic oxidation as well as hydrolysis in presence of HgSO4 to produce aldehyde or ketone accordingly। Alkene, from alkene by means of ozonolysis we can get the aldehyde or ketone। then from Grignard's reagent react is added with SCN or alkyl nitrile to produce aldehyde and ketone accordingly। Benzyl by means of ETAT reaction we can get benzaldehyde from toluene। further benzaldehyde can be prepared from benzene by means of Getterman-Koch reaction। phenyl ketone can be prepared from benzene by treating with acid chloride। then only formaldehyde is gaseous in nature, otherwise all are liquid and solid। and lower aldehydes are more soluble in water, whereas higher aldehyde or ketone are less soluble in water। boiling point of alcohol is more than boiling point of ketone, is more than boiling point of aldehyde, is more than boiling point of alkane। SCN when added it gives rise to cyanohydrin। further sodium bisulfite when added it gives rise to sodium bisulfite। Grignard's reagent when added followed by hydrolysis it forms the alcohol। hydrogen when added we get hydroxylamine, when added we get oxime। hydrogen when added we get hydrogen। phenylhydrogen when added we get phenylhydrogen। semicarbazide when added we get semicarbazone। 2,4-DNPH when added we get 2,4-dinitrophenylhydrogen। for aldol condensation the condition must be aldehyde containing an alpha hydrogen and it gives rise to the beta hydroxy aldehyde in presence of dilute base। further for Kishner reaction the aldehyde must not contain the alpha hydrogen, or aldehyde having no alpha hydrogen will give rise to alcohol and sodium salt। and the mechanisms are, these are the steps involved in the mechanism। further on reacting with PCl5 we can get dichloroalkane। on reacting with ammonia we get urotropine as product। further ammonia it can also react with ammonia to produce aldimine, particularly aldehyde, and in case of ketone an amine is formed, particularly acetone। further catalytic reduction will give rise to alcohol, primary or secondary depending upon the aldehyde or ketone group। so इठु हमें सॉल्व करिबा दिस इज एसिटाल्डिहाइड ताको हमें जतले कैटालिटिक रिडक्शन करिबा कोन पाइबा प्रोडक्ट। so we will get here ethanol, एठी कोन पाइबा CH3CH CH3OH। एठी propane 2OL, एठी कोन पाइबा HCHOH। yes very good
लवकुश कहले इथानॉल फर्दर एटी पैलाडियम यूज कले C2H5 CH2H एटी कौन आसो बेंजीन फर्दर CH2H and the names accordingly what are the names for the given compounds एटी आसो इथानॉल एटी आसो प्रोपेन 2OL very good लवकुश good morning Elena good बढ़िया Nikki and this will be methanol this will be propanol this will be benzyl alcohol or benzenol सो होमवर्क गत थर विशेष दिया ही पार नथला मु टिके व्यस्त थिली बोली के ठीक अछि तापर नेक्स्ट हम जिबा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पर नेक्स्ट रिएक्शन आडगु नेक्स्ट अछि रिडक्शन यूजिंग a reducing agent that is your reduction in presence of reducing agent so 2 number आसीबो reduction in presence of reducing agent सेडी मेटल थिला एटी reducing agent ऐड कराबो सेडा हाइड्रोजनेशन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कारण एटी तुमे कैटालिटिक रिडक्शन बर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहि परिबा बिकॉज़ एटी H2 ऐड होथिला किंतु दिस इज नॉट कैटालिटिक रिडक्शन दिस इज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट जे कोनोसी गोटे रिएजेंट रो प्रेजेंस रे रिडक्शन होबो फॉर एग्जांपल रिएजेंट इज LiLH4 बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 NaBH4 so aldehyde and ketone get reduced to 1 degree and 2 degree alcohol when treated with LiLH4 like reducing agents ठीक अछि सेम प्रोडक्ट सेम आसीबो जस्ट केवल एटी तरीका अलगा रहइबो सो जदि हम देखिबा CH3CHO यस रुद्र गुड मॉर्निंग याकु जेतबेला में LiLH4 रो प्रेजेंस रे हम तळे ट्रीटमेंट करिवा वी विल गेट CH3CH2H further it is C2H5 CHO nele we will get C2H5 further it is jodi ame CH3 COCH3 naba then acetophenone LiLH4 सहित ट्रीटमेंट कले हमर कोन कोन प्रोडक्ट आसीबो फास्ट रे कोन आसीबो सेकंड रे फास्ट रे तो ऑलरेडी ही सर्च व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन दिस phases C2H5 CH2H मुई निजे कर दोछि फर्दर इट हैज योर CH3CH OHCH3 propanol very good lavakus then this will be benzene CHOH CH3 okay a compound ro na kon hobo particularly this compound has name that is your 1-phenyl ba phenyl ethanol phenyl ethanol okay name of the compound will be phenyl ethanol next देखिबा reduction 3 number आछि reduction the third number reduction is reduction to hydrocarbon
आम देखा क्लेमेंसन रिडक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन सो आम जदि वार्डिंग लिखा aldehyde and ketones get reduced to alkane in presence of से चैनल रे हबो क्लास हबो टिके डेरी कहीं ना मु आफ्टरनून रे टाइम पाइले क्लास करी आफ्टरनून रे टाइम पाइबा टिके कमी जाए आफ्टरनून रे टाइम पाइले क्लास हबो रुद्र इवनिंग आवर रे भी क्लास टाइम मिलले क्लास करी aldehyde and ketones get reduced to alkane in presence of zinc amalgam and concentrated HCl. So concentrated HCl और जिंक मर्क्यूरी amalgam रो प्रेजेंस रे कौन होबना aldehyde ketone तुम्हारा alkane रे कन्वर्ट हो RCHO will be converted into zinc mercury amalgam. This is zinc mercury amalgam. Our concentrated HCl जितोला में नबा we will get RCH2OH. Okay. RCH2OH. Further again जितोला में कीटोन भी नबा RCOR मन रखो क्लेमेंसन रिडक्शन रे जिंक मर्क्यूरी और कंसंट्रेटेड HCl केमदी मन रखियो देखो इठी आगु को मो आरोडा वुल्फ किस्नर पढ़े देला पर तापर रिएजेंट मन रखियो ट्रिक कह देबी how can you remember that tricks concentrated HCl it will give rise to CHOHR ठीक अछि एबले aldehyde और ketone sorry एडी अल्कोहल आसीबो नाही सॉरी भूल गेला हियर यू विल गेट ओनली alkane एडी केवल alkane आसीबो विथ रिमूवल ऑफ वाटर H2O रिमूव हेकी पळेबो एडी RCH2R प्लस H2O हिजो ठीक अछि एडी alkane आसीबो ओके तो आमे जो देखिबा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO जदि आमे जिंक कॉपर अमालगम यूज करिबा आ तुमारो concentrated HCl यूज करिबा कोन आसीबो प्रोडक्ट गोटे गोटे आंसर कहो समझते अच्छा स्क्रीन ब्लर आसुनी तो स्क्रीन रे लेखा गुडाक टिके ब्लर आसुनी तो ना परफेक्ट आसुची पूरा श्रावण भूल हो गला सेटा हबनी अल्केन बढ़िया आंसर नवीन बहुत सुंदर आंसर अच्छा कार स्क्रीन जदि ब्लर आसुची को कार स्क्रीन जदि ब्लर भी आसुनी देन आल्सो प्लीज टेल मी प्लीज लेट मी नो डू यू फाइंड एनी ब्लर ऑन द स्क्रीन और नॉट निकी मते पर्टिकुलरली स्क्रीनशॉट पठै परियो केंदी आसुची स्क्रीन
फर्दर एटा एसिटोफेनॉन गिव राइज टू व्हिच प्रोडक्ट 2 नंबर आंसर कहि सालेनी नवीन मिथेन बहुत सुंदर आंसर कहले नवीन दुईटी जगह आंसर ठीक ठाक कहि सालेनी अच्छा ठीक अछि ताले मते ही ब्लर आछे ओके 3 नंबर प्रोपेन 4 नंबर ब्यूटेन बहुत सुंदर एलिना आंसर देइचंती तापरे नवीन 4 नंबर जाय नवीन पळेलेनी बा अन्य माने भी आंसर कर पिला माने नवीन बहुत सुंदर आंसर देखो श्रावणी कुआडे गलो नवीन देखो आगु को पळेले नवीन तुमको सबुडा आंसर नवीन ही करचंती 5 नंबर पेंटेन बा सो ये सब गुड़ा प्रोडक्ट बर्तमान लिखार टाइम पलि आसला ये कौन आसो CH3 सो ये आसो इथेन प्लस H2O एज ए बाय प्रोडक्ट ये कौन आसो CH4 ओनली दैट इज मिथेन प्लस H2O नवीन 6 नंबर जाए पलि आसले फर्दर C2H5 CH3 दैट इज प्रोपेन प्लस H2O तापर आसो C3H7 CH3 ब्यूटेन प्लस H2O सर ऑलरेडी करी सारे फोन रे टाइपिंग कला बेले लेट हो अच्छा C4H9 CH3 प्लस H2O दैट इज पेंटेन टाइप करियो ना तुम्हें कौन करछ न करछ केमती जाना पड़िबो श्रावणी फर्दर CH3 COH CHOH सॉरी CH3 CH2 CH3 एडी भी आसजिवो तुमरो प्रोपेन ध्यान देकी देख पिला माने एठी गोटे बहुत बड़ कथा जे तुमर जिते सी एसिटाल्डिहाइड रहिबो सेतेबेले भी प्रोपेन रहिबो जिते सी एसीटोन रहिबो सेतेबेले भी प्रोपेन रहिबो ठीक अछि एसीटोन रहिले भी प्रोपेन आसीबो एसिटाल्डिहाइड रहिले भी प्रोपेन आसीबो ओके ब्यूटेन बढ़िया कथा तापरे CH3 नवीन कही सारे दिस इज ब्यूटेन CH2 C2H5 सो दिस इज ब्यूटेन प्लस H2O आउ बाय प्रोडक्ट मु लिखुनी सब गुड़ा न लिखिदेव ना तुम भी लिख फर्दर ये कौन आसो या पर नेम गुड़ाक तुम्हें कह व्हाट आर द नेम्स 8 नंबर कौन हम ना कह व्हाट इज द नेम ऑफ 8th नंबर 9th नंबर कौन हम इथाइल फिनाइल ना दिस इज इथाइल बेंजीन आसो ठीक अच्छे दैट वाज योर इथाइल बेंजीन ता ना हम इथाइल बेंजीन ठीक अच्छे यार प्रोडक्ट पर्टिकुलरली टॉलुइन वेरी गुड लवकुश टॉलुइन आसो यार ना कारण आम इटाट्स रिएक्शन रे देखले टॉलुइन
in presence of CrO2 Cl2 CCl4 give rise to benzaldehyde. फर्दर एठी जो प्रोडक्ट आस्थिला कोन हबो मु टिके नई जाउची सो दैट देखिनियो प्रोडक्ट कोन आसीबो प्रोडक्ट नेम कोन हबो डाइफिनाइल मीथेन ठीक अछि नेम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डाइफिनाइल मीथेन ओके डाइफिनाइल मीथेन बुझी पाला समझते नेक्स्ट हमें जिबा रिडक्शन नेक्स्ट रिडक्शन जिबा 3 नंबर सरला 4 नंबर वोल्फ किस्नर रिडक्शन वोल्फ किस्नर रिडक्शन वोल्फ किस्नर रिडक्शन ओके वोल्फ किस्नर रिडक्शन रे कोन हुए वोल्फ किस्नर रिडक्शन रे aldehyde and ketone when aldehyde एटा बहुत इंपोर्टेंट पिला माने वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्लेमेंसन एतटा इंपोर्टेंट नै जति कि वोल्फ किस्नर इंपोर्टेंट aldehyde and ketone get reduced to alkane ये भी alkane हबो किंतु एठी रिएजेंट अलगा in presence of hydrazine KOH then ethylene glycol hydrazine KOH ethylene glycol with subsequent heat एतिकी जिनस दबा को पड़िबो हमकु aldehyde ketone रु alkane पाइबा को हेले तो एठी aldehyde ketone सपोज RCH अछि RCHO ता सहित जोला हाइड्रोजन माने NH2 NH2 ट्रीटमेंट करबा हमें कोन पाइबा व्हाट इज द प्रोडक्ट इफ वी ट्रीट विथ हाइड्रोजन कौन आसीबो प्रोडक्ट जेतोला हमें हाइड्रोजन सहित ट्रीटमेंट करबा aldehyde को कौन आसीबो पिला माने प्रोडक्ट aldehyde hydrogen yes प्रेमोस बढ़िया कथा aldehyde hydrogen so R C H double bond N NH2 further it will be R C R dash double bond N NH2 okay so you will get the product that is your एटी कौन आसीबो product एटा हबो तुमरो hydrogen so it is your hydrogen what is the name of the compound it will be your aldehyde hydrogen and this is ketone hydrogen okay this is aldehyde hydrogen एटा ketone hydrogen ताकू जेतेबेले हमें ट्रीटमेंट करबा इथिलीन ग्लाइकोल और KOH सहित KOH रो प्रेजेंस रे और इथिलीन ग्लाइकोल रो प्रेजेंस रे जेतेबेले हमें ट्रीटमेंट करबा when we treat with ethylene glycol and KOH then ethylene glycol माने कोन ना तुम्हारो CH2OH further this is also CH2OH so এটা হচ্ছে ethylene glycol ঠিক আছে ethylene রে দুইটা OH লাগিব this is a vaccinal alcohol or vaccinal diol हिट दिया जिवो तो एटी प्रोडक्ट कोन आसीबो को KOH तो एटी प्रोडक्ट आसीबो RCH so it will be RCH
सिंगल बॉन्ड सॉरी एडी H2 हे जीवो प्लस N2 बाहरी की पळेबो तो एटा केमदी मन रखिबा रिएक्शन टा दैट सी हियर दिस इज योर N2 बाहरी की पळेबो H2 अटैच हे जीवो सो N2 बाहरी की पळेबो H2 डायरेक्ट अटैच हे जीवो ठीक अछि दिस द ट्रिक टू रिमेंबर द प्रोडक्ट एमदरे भी तुमे माने जानिछो जे एटा तुम्हारा प्रोडक्ट दबट दैट इज योर alkane नेक्स्ट हमें किसी एग्जांपल करिबा एसिटाल्डिहाइड इनिशियली आम ने एसिटाल्डिहाइड ताकू हाइड्रोजन सहित ट्रीटमेंट कले कौन पाइबा पुणी ताकू आउ थरे KOH आउ ग्लाइकल सहित ट्रीटमेंट कले कौन पाइबा आल्डिहाइड हाइड्रोजन फर्दर एसीटोन को हाइड्रोजन सहित ट्रीटमेंट कले कौन पाइबा प्रोडक्ट देन बेंजाल्डिहाइड को ट्रीटमेंट कले हाइड्रोजन सहित कौन आसीबो प्रोडक्ट this will be CH3 CH double bond and NH2 one ethane methane propane good this is your acetaldehyde hydrogen good नवीन बहुत सुंदर which will produce CH3 ethane plus N2 okay next methane propane अच्छा so this will be H C double bond N NH2 SCH but CH2 double bond NNH2 so this will be your formaldehyde hydrogen which will produce CH4 methane plus N2 then it will be C2H5 bond CH double bond NNH2 चारि नंबर प्रोपेन बढ़िया कथा so it will be C3H6 plus N2 this is your propane 4 नंबर आंसर आछी CH3 double bond NNH that is your acetone hydrogen which will give rise to CH2 propane बहुत सुंदर आंसर देचंदी नवीन तापरे एठी कोन आसीबो बेंजाल्डिहाइड C double bond CH double bond NNH2 good नवीन आंसर टॉलुइन नवीन has given आंसर टॉलुइन ओके बढ़िया आंसर मु क्वेश्चन सॉल्व करिया पूर्व नवीन आंसर दे दोचंदी बहुत बढ़िया टॉलुइन सो आमे बर्तन मन केमदी रखिबा हाउ कैन यू रिमेंबर व्हिच वन इज वोल्फ किस्नर रिडक्शन व्हिच वन इज योर क्लेमेंसन ले माने क्लेमेंसन रिडक्शन रे कोन कोन यूज करा होचे टी मन रखियो जिंक मर्क्यूरी कप अमलगम आउ कंसंट्रेटेड HCl एडी हाइड्रोजन आउ KOH ग्लाइकल इथिलीन ग्लाइकल
सो आम केमती लिखा दैट क्लेमेंसन रिडक्शन लिखिदब गोटे साइड क्लेमेंसन रिडक्शन and another side Wolff-Kishner reduction product तो सेम आसुची किंतु हमको टिके काम देखिबार अछि क्लेमेंसन रिडक्शन रे हमर कोन कोन रहउची प्रथमे सी माने सी एटी कंसंट्रेटेड HCl मन रखो किंदी मन रखिबो सी माने कंसंट्रेटेड HCl आ कोन कोन यूज कराउतला आ तुमरो जिंक मर्क्यूरी अमालगम concentrated HCl आउ जिंक मर्क्यूरी अमालगम सो H थिला concentrated HCl H पाखरे पुणी आउथरे Hg नै जिवो जिंक नै जिवो सो मर्क्यूरी जिंक बा जिंक मर्क्यूरी अमालगम concentrated HCl आसीबो रिएजेंट फर्दर Wolff-Kishner रिडक्शन Wolff-Kishner एडा मन रहला ना प्रथम लेटर यार C रहिछि क्लेमेंसन रिडक्शन प्रथम लेटर फर्स्ट लेटर इज C थिबारु एठी concentrated HCl यूज होला ये भी सी H ର प्रथम लेटर H सो मर्क्यूरी जिंक यूज कराला सो दिस द ट्रिक टू रिमेंबर Wolff-Kishner रिडक्शन रे केमदि मन रखियो Wolff-Kishner रिडक्शन माने तुमरो कोन करनी आइछि प्रथमे हाइड्रोजन ठीक अछि देन KOH आउ इथिलीन ग्लाइकॉल KOH आउ इथिलीन ग्लाइकॉल this is your Wolff-Kishner reduction तो ये मन रखिया पई केने मन रखियो Wolff-Kishner reduction रे क्लेमेंसन डज एमदी मन रहला concentrated HCl H माने HCl Hg जिंक रहइबो Wolff-Kishner reduction माने NH2NH2 KOH रहइबो CH2OH CH2OH रहइबो ओके सो इट इज Wolff-Kishner reduction ए पैटर्न रे मन रखियो आउ किछि उपाय नै ताकू मन रखियो पई किछि ट्रिक मो माइंड रे भी आसु नले एमदी मन रखियो